Hello everyone, welcome again to my YouTube channel that is Life Science and today I am coming with a new video जहाँ पे मैं आपके साथ जूलॉजी एग्जामिनेशन पेपर 2021 कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर मैंने शेयर कर रही हूँ जिसका ये पार्ट 2 होगा। मैंने पार्ट 1 में आपके साथ टोटली 33 क्वेश्चन शेयर किए और आज मैं आपके साथ उसका सेकंड सेक्शन इट मीन्स सेकंड पेपर शेयर करूँगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। Question number 34. The question is T cells are responsible for option A cellular immunity, option B humoral immunity, option C innate immunity and option D none of these. So the correct option is option A cellular immunity. Question number 35. Study of only two variables is known as option A simple regression, option B multiple regression, option C non-linear regression and option D analysis of regression. So the correct option is option A simple regression. And question number 36. Calculate the mode of 60, 50, 55, 60, 70, 72 and 60. सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन ए इज़ 50, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 70। आपको जब भी मोड कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन देता है तो अगर वो सिंपली सीरीज़ में दिया हुआ है तो मोड आप बिल्कुल सिंपली जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है उसको आप मोड में कंसिडर करेंगे। बट इन केस अगर आपको मोड एक इन द वे सीरीज़ में सिंपल सीरीज़ में ना देकर आपके साथ क्लास एंड उसके फ्रिक्वेंसी शेयर करें तो उसके फॉर्मूले के साथ हम उसे सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सिंपली एक सीरीज़ में दिया हुआ है और यहाँ पे हमें नॉर्मली जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है उसको हम मोड में कंसीडर करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 60। Question number 37. Association between two variables is done by option A chi-square test, option B regression and option C correlation and option D normal distribution. So the correct option is option C correlation. Okay, question number 38. Standard error of mean can be calculated by option A simple deviation upon root n and standard deviation upon root n, option B under root x minus x bar upon n and option C summation of fx upon summation of f and option D sd का whole square. So the correct option is option A standard deviation upon root n. Question number 39. Values arranged in ascending and descending order is to calculate option A mode, option B mean, option C median and option D standard deviation. So the correct option is option C median. हमें जब भी मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो जो सीरीज़ में नंबर दी हुई होती है उसे हम या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करते हैं, देन हम उसे मीडियन कैलकुलेट कर पाते हैं। सो next question is question number 40. Standard deviation is option A square root of deviation, option B mean deviation, option C variance and option D coefficient of variation. So the correct option is option A square root of deviation. Question number 41. Mean value of 15, 65, 75, 80 and 90 and the option is 90, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 66 एंड ऑप्शन डी 65। सो जो भी हमें मेन कैलकुलेट करना होता है और अगर वो सिंपल सीरीज़ में दिया हुआ है तो हम मेन कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली सभी नंबर्स को सम करेंगे। इट मीन्स सम ऑफ द टोटल नंबर एंड अपॉन जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं नंबर्स कैलकुलेट द नंबर, कितने नंबर दिए हुए हैं। लाइक यहाँ पे हमें टोटली 5 नंबर्स दिए हैं तो टोटली हम इनको सम करेंगे एंड उसे 5 से डिवाइड कर देंगे। सो हमें मेन कैलकुलेट का आंसर आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 65। आप इसको एक सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42. Cluster sampling is a option A random sampling, option B non-random sampling and option C qualitative sampling and option D none of the above. So the correct option is option A random sampling. Question number 43. One of the most useful method for identify specific gene is
Option A northern blot, option B southern blot, and option C western blot, and option D all of them. So the correct option is option B southern blot, क्योंकि जीन जो है वो डीएनए से बने होते हैं और डीएनए के आइडेंटिफाई करने के लिए हम साउदर्न ब्लॉट का यूज़ करते हैं, नॉर्थर्न में हम आरएनए का यूज़ करते हैं, आरएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड वेस्टर्न में हम प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44. अ मोनोक्रोमेटर इज अ ऑप्शन ए मेजर absorption of radiation, option C measure ionic strength, option C produces light of one color, and option D produces light of different color. So the correct option is option C produces light of one color. Question number 45. Lambert-Beer law is option A T is equal to I upon I0, option B Z is equal to omega square x, option C A upon I is equal to log I0 upon I, and option D Na is equal to n sin theta. So the correct option is option A T is equal to I upon I0. Question number 46. Amino acid or protein can be detected by option A chromatography, option B electrophoresis, option C centrifugation, and option D is spectrophotometry. So the correct option is option A chromatography. Question number 47. Chromatography is coined by option A Beer and Lambert, option B Arne Teslius, and option C Michael Teslius, and option D Thomas Graham. So the correct option is option C Michael Teslius. Question number 48. Microscope which uses high wavelength ultraviolet rays is option A ultraviolet microscope, option B phase contrast microscope, option C fluorescence microscope, and option D all of them. So the correct option is option C fluorescence microscope. Next question is 49. Centrifugation technique is applied for option A study cell structure, option B to separate cell organelle, option C migration of charged molecule, and option D measure intensity of light. So the correct option is option B to separate cell organelle. Question number 50. The alkaline range on a pH scale is lie between option A 7 to 14, option B 0, option C 0 to 14, and option D 0 to 2. So the correct option is option A 7 to 14. Question number 51. Maximum magnification of an electron microscope is option A 2 lakh x, option B 20,000 x, option C 2000, and option D 200. So the correct option is option A 2 lakh. And question number 52. Vaccine available for human disease is option A smallpox, option B polio, option C hepatitis B, and option D all of them. So the correct option is option D all of them. Question number 53. Allergic reaction develop in response to option A serotonin, option B heparin, option C histamine, and option D heparin. So the correct option is option C histamine. Question number 54. Interferons suppress the activity of option A bacteria, option B viruses, and option C protozoans, and option D nematode. So the correct option is option B viruses. Question number 55. An antigen is option A produced by antibody, option B residue of antibody, option C stimulus for antibody formation, option D opposite to an antibody. So the correct option is option A produced by antibody. Question number 56. Vaccination induces formation of option A antigen, option B antibody, option C antibiotics, and option D antitoxin. So the correct option is option B antibody. Question number 57. Antibodies are option A immunoglobulins, option B globular proteins, option C carbohydrate, and option D amino acid. So the correct option is option A is immunoglobulins. Question number 58. Vaccination induces formation of option A antigen, option B antibody, option C antibiotics, and option D antitoxins. So the correct option is option B antibody. Question number 57. Antibodies are question number after question number 57, question number 58. Passive immunity is obtained by option A antigens are injected, option B antibodies are injected, and option C attenuated pathogens are injected, and option D none of these. So the correct option is option B antibodies are injected. Question number 59.
PCR is used in option A genetic counseling, option B gene amplification, option C gene mutation, and option D protein sequencing. So the correct option is option B gene amplification. Question number 60. Probes are used for option A DNA cloning, option B bacterial cloning, and option C detection of homologous sequence in DNA, and option D none of these. एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं. क्वेश्चन नंबर 61. Enzyme involved in the production of alcohol. Option A invertase, option B zymase, and option C amylase, and option D lipase. So the correct option is option A invertase. Question number 62. Commercially produced human insulin is known as option A penicillin, option B cortisone, option C humulin, and option D lactic acid. So the correct option is option C humulin. Question number 63. The organic acid produced by fermentation is option A lactic acid, option B oxalic acid, option C citric acid, option D propionic acid. So the correct option is option A lactic acid. Question number 64. First antibiotic isolated was option A streptomycin, option B erythromycin, option C penicillin, option D neomycin. So the correct option is option C penicillin. Question number 65. Majority of the industrial enzymes are produced from option A gram positive bacteria, option B gram negative bacteria, and option C mycoplasma, and option D algae. So the correct option is option A gram positive bacteria. Question number 66. Which enzyme is used for cutting DNA in genetic engineering? Option A maltase, option B ligase, option C RNA polymerase, and option D restriction endonuclease. So the correct option is option D restriction endonuclease, जिसका यूज़ हम DNA को कट करने के लिए करते हैं. सो ये रहे टोटली 66 क्वेश्चंस, और जिसमें मैंने आपके साथ सेक्शन बी शेयर किया, और आगे मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपके साथ सेक्शन सी शेयर करूँगी. सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट. थैंक यू सो मच.